Hey everyone, how's it going? My name is Aakash Singh, and in this video we'll be looking at some type of data handling जो हम लोग Python के अंदर करते हैं. So कभी भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग को वेरियस टाइप ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स डालनी पड़ती है, हम लोगों को आइटरेशंस करनी पड़ती हैं, एंड ऑल दोज लॉजिकल स्टेटमेंट्स इवेंचुअली हैंडल द डेटा. नाउ इन दिस सेशन हम लोग देखेंगे व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स ऑफर्ड बाय पाइथन. हम लोग ऑपरेशंस देखेंगे, आप उन डेटा टाइप्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो, एंड एट द एंड विल आल्सो लुक एट अ कपल ऑफ पाइथन कोड जिससे आपको उस सब चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉलोइंग बेसिक्स विच आर एक्चुअली नेसेसरी अगर आप पाइथन कोडिंग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो. सो आई एम अज्यूमिंग कि आप 1 या 2 महीनों से पाइथन सीख रहे हो, पाइथन में कोड कर रहे हो. सो आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स व्हेन आई स्टार्टेड कोडिंग आई गॉट टू नो दीज 3 things that each programmer I think should know. So logic and decision making हर एक प्रोग्राम के अंदर आएगा. You have to take decisions while making a program. Let's say आप किसी भी यूजर से एक इनपुट ले रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इनपुट क्या करने वाला है आगे. सो इट नीड्स टू हैव सम काइंड ऑफ लॉजिक एंड डिसीजन मेकिंग. द सेकेंड पार्ट कैन बी आइटरेशन, जो हम लोग देखते हैं जनरली फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर, डू वाइल लूप के अंदर. तो जहां पर स्टेटमेंट्स को रिपीट किया जाता है ताकि आप एक आउटपुट मल्टीपल टाइम्स ले सको या फिर कोई और स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स आइटरेट कर सको. एंड थर्ड पार्ट इज द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड हैंडलिंग. सो दिस इज द पार्ट विच वी आर गोना कवर टुडे, जहां पर हम लोग वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, डेटा टाइप्स देखेंगे, हाउ डू यू हैंडल देम, व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस दैट यू परफॉर्म ऑन देम. So these are the following data types in Python. Numbers, we are familiar with them. Integers हो सकते हैं, float हो सकता है. String basically text होता है. List and tuple we are taking together because essentially they are of the same type, but there is one specific difference between them जो हम लोग देखेंगे आगे. And the fourth part is dictionary. They are also known as built-in or core data types. Why are they called that? Is because पाइथन आपको ये सब डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो. इट्स नॉट लाइक कि आपको ये डेटा टाइप खुद बनाने पड़ेंगे या फिर आपको कहीं से ये इंस्टॉल या डाउनलोड अलग से करने पड़ेंगे. दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय पाइथन टू यू फॉर योर प्रोग्रामिंग नॉलेज. So looking at the first type, which is numbers, they can actually be divided into 3 parts. So अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, आपने मैथमेटिक्स में थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए फॉर 11th, so you might understand that they are of 3 types, एक normal integers or you can also say whole numbers. Float type basically होता है आपका decimals, and complex जहाँ पर आपका iota आता है, जहाँ पर आप imaginary numbers को display करते हो. So these are the 3 types of Python numbers. Let's look at int first. So int is the most common type of डेटा टाइप विच इज एक्चुअली यूज्ड इनसाइड पाइथन. अगर आप कोई भी अपने प्रोग्राम्स देखोगे आप वहां पर जनरली INT इनपुट लोगे या फिर INT आउटपुट करोगे. सो दे आर एक्चुअली ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है इंटीजर्स, जो नॉर्मल इंटीजर्स होते हैं. अगर मैंने बोला 444 या फिर 144, दे आर ऑल इंटीजर्स. सो नाउ देर आर अदर काइंड ऑफ इंटीजर्स एज वेल जहां पर हम लोग सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स डिपिक्ट करते हैं. वाई ट्रू एंड फॉल्स? सो इफ यू रिमेंबर, बाइनरी लैंग्वेज में हम लोग 2 डिजिट्स यूज करते हैं, एक 1 और एक 0. सो नाउ इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट देम इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट डेटा टाइप, हम लोग बूलियन इंटीजर्स करते हैं. सो नाउ इंटीजर डेटा टाइप हैज अ नॉर्मल टाइप ऑफ नंबर्स एंड बूलियन इंटीजर्स. बूलियन कुछ नहीं, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स, बेसिकली 1 and 0. नेक्स्ट टाइप इज द फ्लोट टाइप विच वी ऑल्सो called the decimal type. Decimal को हम लोग floating type इसलिए बोलते हैं. So let me give you an example. So 3.14 is a floating point number. But again, if I write something like this, या फिर if I write, if you see यहाँ पर जो decimal का position है वो change हो रहा है. So earlier there were only 2 digits on the right hand side. फिर finally यहाँ पर 3 digits हो गया on the right hand side. यहाँ पर again 2 on the left and 2 on the right. So the reason why we call it floating point is because ये जो decimal point है ये float कर सकता है एक जगह से दूसरे position पर. So they are also of 2 types. Fractional form जो हम लोग अभी represent कर रहे थे by use of decimal number, and the exponent notation.
सो अगर आपने स्पीड ऑफ लाइट देखा होगा 3 × 10⁻⁻10 जो हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं, सो दिस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ सिमिलर रिप्रेजेंटेशन, बट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द नोटेशन E, राइट. यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. सो इफ यू आर स्टडिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, सो दीज नोटेशन माइट बी कॉमन फॉर यू. ओके, सो नंबर का थर्ड डेटा टाइप आता है कॉम्प्लेक्स. नाउ दीज आर एक्चुअली इमेजिनरी नंबर्स, ये रियल नहीं होते, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट देम ऑन अ नंबर लाइन. तो सिंस मैथमेटिक्स में हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है रियल पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट इज एक्चुअली द इमेजिनरी पार्ट जो प्रेसीड होता है आई से, और बेसिकली हम लोग इसको आयोटा भी बोलते हैं. सो दिस हैपन्स इन योर मैथमेटिक्स. बट व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन पाइथन, हम लोग आई नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे जे. सो ओवर हियर अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए, सो दिस वुड बी द रियल पार्ट and the imaginary part would be represented like this. ठीक है. अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और इमेजिनरी नंबर है b, 1.5 plus 2j. now if I want to look at the real part of b, I just say b dot real and this will give you 1.5. और अगर मुझे b का इमेजिनरी पार्ट देखना है, it will give you 2. So these are the numerical data types which are actually present inside Python. सबसे कॉमन आपका int ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स आप ज्यादा यूज नहीं करोगे until and unless you are doing some mathematical programming. Next data type is strings. Again, this is the next most common data type after integer data type. It can actually hold any type of value. अगर आपको नंबर चाहिए, आपको नंबर मिलेगा. You can store special characters, you can also store text, you can also store the combination together. Now they are also known as a sequence of characters. Why sequence? Let's say I want to store a variable. यहाँ पर मैंने variable a लिया है जिसका value है Python is easy. Now inside the memory of a computer, it won't be stored like this. वो आप डायरेक्टली वर्ड वाइज स्टोर नहीं करेगा, इट विल बी डिवाइडिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स. सो इनसाइड द मेमोरी it will look something like this. So once you have broken down a string into its characters, आप उसको एक index देते हो. Index can start from 0 or it can also start from the negative value. So this part we'll cover later, but for now just understand each and every string is a sequence. Sequence basically जैसे अगर आप ट्रेन देखोगे उसमें जो हर एक कंपार्टमेंट होता है it has a number associated, like 1, 1a, then 2a and so on. Similarly, inside a string, each of these characters are provided with an index number. So these index numbers start from 0. They don't start from 1, they actually start from 0. So if I say the length of this string is 14, so which means that इसके जो index values हैं वो जाएंगे 0 से लेके 14 minus 1, not 14, because it's starting from 0, right? So ये 14 पे end नहीं हो सकता है, it should end at 13. So Python also provides you with a functionality that आप जो indexing कर रहे हो, it does not necessarily start with 0, it can also start from the end. So I can also say कि जो p की position है it is minus 14. So basically the origin has shifted from the left hand side to the right hand side. So let's have a look at an example of how you work with strings. So strings हमने बोला था that it is a sequence, right? Which means each and every character over here has a position associated with it. So अगर मैंने बोला कि okay, so I have assigned this value to this variable. Okay, so if I try to say what is the character at position 0 inside the variable str, so this is how we read it.
this is the variable name, and this is the position. Position will always be inside square brackets. So if you look at the diagram, the position of H over here is actually 0. So that is why this is being displayed. Again, if I say str at 3, which is actually L, and that will be stored as a value. So again, if I say just str at 5, so this won't give you an output. This will actually give you an error that the string index is out of bounds. Okay? So this is how you work with strings. Each and every character has an index associated with it. Now there is another form जहाँ पर हम लोग strings को notate करते हैं. Let's say I do not want to print just one character. I want to print a substring. Substring का मतलब होता है complete string का छोटा सा पार्ट. हो सकता है ये 3 characters का पार्ट हो सकता है 2 characters या maybe 4 characters. So this is the functionality of Python जहाँ पर हम लोग एक string को उसे constituent substrings में divide कर सकते हैं. So the most simple method to display a string using this notation is like this. So अगर मैंने एक string variable लिखा है, this is how you notate. So let's say I want to print this entire string. ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे प्रिंट करेंगे. str starts at 0, the 0th position. इसके बाद we move on to the end index. End index क्या हुआ? This is 0, 1, 2, 3, 4. So there's some issue with the notation like this. So this should come here. इसका जो length है, that is actually 5. And the last index would be 4. So in order for you to print the entire string from 0 to 4, आपको लिखना पड़ेगा 5. Because मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू डालूंगा वो कंसिडर नहीं होगी. The value which will be considered is only till 4. So this gives you H E L L O 0, 1, 2, 3 and 4. Again remember, the reason why we are not putting 4 over here is because वो consider नहीं होता. You always have to put a value which is more than the last index value. Similarly, if you want to display the substring according to your wish, अगर मुझे first 2 character print करने हैं, so this is how you do it. Starting index is 0, then it will not go to 2, it will only go till 1. So HE will be printed. If I start from 1 and go till 4, the numbers and the indexes which will be printed are E, L, L. Right? So this is how substrings in Python work. And if you want to print the entire string, either you can say print str, आपने directly पूरा variable print कर दिया, or you can also say it like this. str starts from, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू अगर नहीं देते हो तो पाइथन को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है फ्रॉम द स्टार्ट टिल द फिनिश. सो दिस वाज अबाउट स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट एंड टपल्स. हम लोगों ने जब इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स देखा, दे आर एक्चुअली जस्ट वन वैल्यू. वो कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज नहीं होता है. स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस, बट ओवरऑल इट इज कंसिडर्ड एज वन सिंगल वैल्यू. जब हम लोग बात करते हैं लिस्ट एंड टपल्स की, दे आर एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज. नाउ दे आर कंपाउंड डेटा टाइप्स विच एसेंशियली मीन्स कि आप उसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो. there's only one difference between list and tuples, that's why I'm considering them as together, that list आप edit कर सकते हो, whereas tuples once created cannot be edited. So let's talk about list. So let's say I'm creating a variable z जहाँ पर मैं एक list store कर रहा हूँ. यहाँ पर मैंने सिर्फ integer values डाली हैं, but if you want you can also change it to something like this. So this is an integer list
बट दिस इज अ मिक्स्ड लिस्ट, जहां पर आप कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप इंटीजर यूज कर रहे हो, आप कैरेक्टर के बदले एक स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो. सो इट इज कंप्लीटली अप टू यू कि जो आप लिस्ट में डेटा टाइप यूज कर रहे हो, दैट वट एवर यू वॉन्ट यू कैन चूज दैट. सो लेट्स से आई हैव declared z as this list. List will always be using square brackets. Now as I said before कि जो list है, list को आप edit कर सकते हो. So which means आप किसी भी position पे एक नई value डाल सकते हो. So if I want to say what is z at 0, z at 0 is actually 3. What is z at 1? It is 7. So now if you don't remember this, always when we are considering strings or anything which has a sequence, हम लोग एक position के through उसके element को display कर सकते हैं. As I said, z at 0 is 3, and if I say z at -1, it will be 2. Right? So this part comes later. Please don't get confused. Anyways, so let's say I want to allot a new entity. I want to allot a new element at position 1. So these are the position 0, 1, 2 and 3. So यहाँ पर हर एक element का एक index है. What I am doing now is, जो ये element है, I am changing it. So I am allotting it z at 1 is now fish. ठीक है? Now this is a string data type. Now if I eventually print z, what will happen? सबसे पहले z की value ये थी. I have changed this element to fish, and then if I print z, it will display this output. So which means you can change the elements of a list once it has been created. Now the basic difference between list and a tuple is actually, एक बार आपने एक tuple create कर दिया तो you will not be able to change any values inside. Another difference is that यहाँ पर हम लोग square brackets नहीं यूज करते हैं, हम लोग parentheses यूज करते हैं. So it has the same properties just as list. The only difference is कि आप कुछ भी change नहीं कर सकते हैं. So let's say if I want to say p at 2. So these are the index positions. So p at 2 would be 3. If I say r at 4, so 0, 1, 2, 3. So it will give you an error. If I say r at 2, it will give me I, which is a character. So this is a data type which is very useful inside Python programming language. इससे भी ज़्यादा एक important data type होता है जिसको हम लोग बोलते हैं dictionaries. So let's take an example of a normal English dictionary. अगर आपको dictionary कभी use करनी है, there are two things which you have to remember. एक चीज़ होती है आपका word जो आपको जिसका meaning ढूंढना है. So once you so let's say I want to find the meaning of the word acknowledge. You find this word inside a dictionary and which will point to this meaning, right? अगर आपको acknowledge का meaning ढूंढना है inside a dictionary, आप dictionary खोलोगे, you will go to the A block, आप देखोगे कहाँ पर ये word present है, and then you will look at the meaning which is associated with that word. In Python language, the dictionary has a kind of a similar meaning. So हम लोग यहाँ पर इनको word meanings नहीं बोलते हैं, हम लोग इनको बोलते हैं keys and values. So यहाँ पर अगर let's say if I am creating a dictionary like this, ये एक dictionary variable है जहाँ पर मैंने एक dictionary store की है. A dictionary is always represented by curly braces. ठीक है? Tuples हम लोगों ने देखा था, they were parentheses. List हम लोगों ने देखा था square brackets. And dictionary में हम लोग use करते हैं curly brackets. तो यहाँ पर जो ये आप येलो में देख रहे हो, which are highlighted inside the inverted commas, they are actually the keys. So let's say if I say dictionary at value b, what do you think will be the answer? The answer would be 2. If I say dictionary at a, the value would be 1. So another important fact about dictionary is कि even though it's a sequence, यहाँ पर आप index positions कभी यूज नहीं करोगे. जैसे हम लोग देख रहे थे lists में, हम लोग strings में देख रहे थे, वहाँ पर index positions होती हैं from 0 to len -1.
यहाँ पर डिक्शनरी में नथिंग इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पर आप डायरेक्टली यूज करोगे कीज, ठीक है। सो दिस इज अनदर डेटा टाइप विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट डेटा टाइप। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन, अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है डिक्शनरी डेटा टाइप के अंदर, इट विल बी द फास्टेस्ट, इट इज फास्टर दैन INT, lists, tuples and strings. So in short, these are the basic data types which we have covered till now. Numeric में हम लोगों ने integer देखा, decimal points, complex numbers. Booleans are also type of numeric data type जहाँ पर हम लोग 1 and 0 use करेंगे. Sequences जहाँ पर एक sequence होता है, एक index position होती है. Lists, tuples, the basic difference was square brackets and parentheses. यहाँ पर आप tuples को edit नहीं कर पाओगे. And also strings. So all these data types bring us to a concept of which one of these can be edited and which one of them can't. So in order to understand that, let's take an example first. So we have 3 statements for our Python program जहाँ पर हम लोग के पास 3 variables हैं P, Q and R. So as we can see 6, 7, 8 are INT data types. So what do you think happens inside a Python program जब हम लोग ये values allot कर रहे हैं? And what would happen if something like this is stated? P becomes 8, Q becomes 9, R becomes 10. So अगर हम लोग starting में variables को ऐसे define कर रहे हैं and eventually statements 4, 5 and 6 हम लोगों ने लिखी, so you might think ये जो P है it is getting changed to 8, Q जो है that is getting changed to 9 and R जो है from 8 it is getting converted to 10. But integers inside Python language are actually immutable types. So let's take an example to understand that. So यहाँ पर हमारे पास again those 3 statements. What happens when I create a variable called P जिसकी value 6 है, Q की value 7 and R की 8. So inside your memory these objects are created with their respective values. So एक object create हुआ, object बोला जाता है उनको, जिसकी value है 6. Second object जो create हुआ उसकी value becomes 7 and the third one is 8. So what happens inside Python is your variable actually points to this object. It does not carry the value itself. ऐसा नहीं है कि P becomes 6. It is not the case. Actually P points to 6. Similarly Q is pointing to 7 and R is pointing to 8. So this is how variable assignment works inside Python language. But how is it related to mutable and immutable types? So let's take another example जहाँ पर मैंने किया है ये. Earlier the values of P, Q and R were defined कि हम लोगों के पास P जो था that was pointing to 6, Q जो था that was pointing to 7, R was pointing to 8. Now after we write these second set of statements, this is what happens. So instead of P pointing to 6, now P will actually point to 9 and this will cancel out. Q will start pointing to 8 and not 7. Similarly R will point to 7 and not 8. So what is happening here is कि इनकी जो values है वो आपको दिख रही है यहाँ पर change होते हैं, but inside the memory nothing is changing. The objects stay at their own positions. ये सारे objects अपने ही positions पे है, but the only thing is these variables now point to different objects. So this is the meaning of immutable data types, that once an object is created it stays at its place. So इन सारे objects को हम लोग address भी दे सकते हैं, like the address of 6 object is A, this is B, this is C and this is D. So now addresses of each of them stays the same, but the only thing changing is the variables change the pointer to other objects. Looking at mutable data types, mutable का example आता है आपका list. So again the similar example जहाँ पर हम लोगों ने Z declare किया था as a collection of elements. Now if I say I want to change this elements to some other element like fish or
maybe Singh, right? So what happens is eventually आपकी इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट था वो चेंज हो जाएगा. So this is the basic difference between mutable and immutable data type. So since we have discussed how do you allot values to variables, ये variables जब हम लोग Python में define करते हैं उनके अंदर थोड़ी values store होती हैं. So let's look at what an object is inside a Python code. So anything which can store value or data is known as an object in Python language. जैसे अगर मैंने बोला a is equal to 4. Now an object with a value 4 will be created जिसको ये a point करेगा. This thing is known as an object. Now these objects in Python language have a couple of properties. जैसे हर एक object का कोई ना कोई type होता है. जैसे अगर मैंने a equal to 4 किया, if I write type of 4, it is integer. If I write type of a, it is again integer data type. The second property would be the value itself. अगर मैं print करूं directly 4, the value of int type 4 is 4, right? Again if I print a यहाँ पर, क्योंकि a की जो value है that has been allotted as 4, an object was created जिसको a point कर रहा था. The value of this object is 4 in integers. And the third attribute is actually the ID or basically an address of your object. So अगर मैं बोलूं, so this is the variable, this is the object. Now a is pointing to 4. It also has an address or an ID associated with it, जिससे ये पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये आपकी मेमोरी में कहाँ पर स्टोर हुआ है. सो इफ आई से ID of 4, इट विल गिव यू एन आउटपुट जहाँ पर आपको एक पूरा एड्रेस दिया जाएगा कि कहाँ पर ये जो वैल्यू है वो स्टोर हुई है. एंड सिमिलरली इफ आई नाउ क्रिएट अ वेरिएबल जहाँ पर 4 स्टोर हो रहा है, एंड इफ आई देन try to find out the ID of A, it will again tell you that yes, A is pointing to 4 जिसका address है 30899,132. So these are the three properties of any objects which are present inside the Python language. Again, object is something which stores a value and has an address associated with it. So this was all about Python data types, how are data types stored inside the Python language. Now let's look at what are the kind of operations that you can perform with these data types. So generally जब हम लोग mathematics देखते हैं, addition, subtraction, division, multiplication, all those things are actually common inside the Python language as well. Apart from the arithmetic operations, there are a couple of other operations जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे relational, identity, logical and bitwise. So let's have a quick look at all of them. You might have covered them before, but it is a good practice to understand them. ये कौन सी चीजें important है. So now addition, subtraction, multiplication, division you might have seen before. These three are actually important. So now a percentage sign will give you the remainder. If I say 4%3, the answer would come out to be 1, because when you divide 4 by 3, the remainder becomes 1. Again, if I divide 10 by 8, the answer would be over here 2. The next up is exponent. So if I say something like this, 10 raised to power 2 is equal to 100. So inside Python, you don't directly write superscript 2. यहाँ पर आपको थोड़े changes करने पड़ते हैं. It is actually represented by 10 double multiplication sign or double asterisk 2. So this will actually again give you the value 100. And there is something else known as integer division or float division. So if I say 5 by 2, it will give you 2.5. But in some cases, I do not want the float value. In some cases, I just want ये जो integer है उसकी value क्या है. So for that specific purpose, what I do is I write this. So this is how you get
all these arithmetic operations and how you can perform them with different variables. नेक्स्ट पार्ट इज रिलेशनल ऑपरेशंस, जहां पर हम लोग देखते हैं कौन से वेरिएबल की वैल्यू दूसरे से बड़ी है, लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड सो ऑन. The most important part over here is not equal to. So when we are comparing two values, so if I say a equal to b, so this is asking you a question, is a equal to b? The answer would be true. Let's say I change the value of 8 to 9. What will be the answer to this be now? It will become false, because the statement over here is asking you ki is a equal to b, and that is not true now. Let's say if I use something else, now not equal to plays an important part here. अगर मैंने ऐसे लिखा a not equal to b, so this is asking you a question, if a is not equal to b, so that would actually come out to be true. So these are all the relational operators which you can use inside your programs. आप देखोगे आगे जाके to solve various problems. All these operators are actually useful and they are generally used inside the conditional statements. Conditional statement में the most common one would be if elif statements, जहाँ पर आप conditions दोगे and उसके अंदर आपको ये सारे operators में भी use करने पड़ सकते हैं. The third type of operators are identity operators. If you remember the concept of objects, right? हम लोग earlier we were looking at this. A equal to b means that we are comparing the values of these two variables. But when I say a is b, it will come out to be true. But over here, it is not comparing the values. It is actually looking at the objects. Are the addresses of these two objects equal or not? So again, identity operators आपकी values compare नहीं करेंगे. They will actually compare the objects which are being compared. So the first type is जहाँ पर आप directly compare कर सकते हो. If A object is B object, then over here it's true. Let's say if I say something like this, x equal to 5 and y is equal to asterisk. So x is not y. So this statement will return you true. So these are the identity operators. Generally हम लोग इनका use नहीं करते हैं for at least 11th and 12th grade, but it is a good thing to know that they are comparing objects instead of values. Okay, so this part is actually important. Inside computers, we know that binary numbers are used. So with these binary numbers, there are specific kind of operations that you can perform. The first type of operation is the sum, or also known as just or operator. So these are the properties of the sum operator. अगर आप 1 और 1 को add करोगे, it will eventually give you 1, because there are only 2 digits inside the binary numbers, which is just 0 and 1. So these are the various properties of sum operator. जब हम लोग product use करेंगे, except for this, जब हम लोग 1 and 1 कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको 1 value मिलेगा and rest all the combinations will return you 0. And complement and negation is something like this. So if I say 1, the value is 1 definitely, but if I use this operator, which means it is not 1, which gives us 0. Similarly, if I say something like this, the value of this number is actually 0, but if I negate it, it will become 1. When we talk about logical operators, हम लोग ने देखा सिर्फ वो 2 डिजिट्स के बीच में परफॉर्म होता है. हो सकता है एडिशन हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है आपका नेगेशन हो. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर्स, द थिंग इज कि यहाँ पर आप सिर्फ एक एक डिजिट को कंपेयर नहीं करते हो, सिर्फ एक एक डिजिट के बीच में ये ऑपरेशन नहीं होता. इट एक्चुअली हैपन्स
between a group of digits like this. I'm just taking an example. तो आप जब ये operations perform करोगे, it will happen bitwise. So let's say if I'm performing this AND operation, so what will happen? First, it will compare these two, 1 and 1. Then next 1 and 0. And next 0 and 1 and so on. So that is the reason they are also known as bitwise operations, because हम लोग एक एक bit करके proceed करते हैं in these type of operations. Okay, so let's have a quick recap of whatever we covered in this video. First we saw the data types. Numbers होते हैं, integer, float, decimals. Next up is string data type, which is generally used for text and storing text type of data. Next is list and tuples. Lists can be changed, they are mutable, whereas tuples cannot be changed once created, they are immutable. And also we talked about dictionary. We took an example of how a normal dictionary is used. Similarly in Python also there is a data type which represents a normal dictionary. Then we covered something about objects. Objects are entities that store value or data. Maybe it can be an integer, it can be a float, it can be a character, or it can even be a string. And each of these objects have certain properties associated. सबका एक value होता है, उनका एक type होता है, and they also have IDs. And the last part which we covered was operations on these data types. Let's take a couple of questions to make your understanding even better. So the first question is asking you, these are the three statements in Python language, जहाँ पर the data types are like this: float, int, and finally we are using the floor division. Now, if you remember, the floor division works like this. If I just divide 5 by 2, the answer would be 2.5. But if I use floor division, it will not give you the decimal part. It will only give you the integer part of your answer. So for this, the answer can be 4 or 4.0. But how do we decide कि इसका जो final data type है, should it be float or should it be int? So this is how this works. So यहाँ पर हम लोग सिर्फ INT और INT के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, राइट, फ्लो डिवीजन. सो दैट इज द रीजन आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल आल्सो बी इन INT. बट इन केसेस वेयर वन ऑफ योर डेटा टाइप इज इन फ्लोट, योर फाइनल डेटा टाइप विल आल्सो बी इन फ्लोट. सो इन पाइथन लैंग्वेज अगर आप कोई भी दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो लाइक दिस 4 + 5.6, so this is an INT data type and this is a float data type. The final answer would be 9.6, which is float. Similarly, if I just say 4 + 4.0, again this is INT float, your final data type will again be in float. So the same thing is happening over here कि एक जो data type है वो है float. So your final answer will also be in float. Okay, so this question is asking you to increase the value of x 5 times using augmented assignment operator. So we did not cover this inside the video, but let's have a look at this. So we want to increase the value of x to 5x. So a simple way would be inside the Python language, x becomes 5x, right? So you have to use the asterisk over here. But again, instead of using this, Python gives you an ability that आपको इतना सब टाइप करने की जरूरत नहीं. You can directly say x asterisk equal to 5, which actually means कि x की जो final value है that is into 5 times itself. If I want to write something like x is equal to x plus 1, now how many times are we typing this? 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 characters associated, but by using the augmented assignment operator आपको एक shortcut दिया जाता है Python में जहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है and your work will be done. So these are a couple of questions. अगर आपको और practice करने हैं questions, you can find them on the CBSE website and I'll be sharing a couple of those inside the group also.
Okay, so a couple of quick codes as well. So there are a couple of statements in front of you and we need to find out ये जहाँ पर भी चीज़ें print हो रहे हैं, what will the outputs be? Okay, so num1 is 10, num2 is 20. When we add these two, num3 becomes 30. So जब हम print करेंगे num3, it will get 30. Now what we are doing is we are trying to find out the type of num3 की num3 का जो data type है, what is it? So this comes out to be int, right? But what if I use this operator? I am creating a new variable called num4 and I am doing the exact same thing जैसे मैंने यहाँ पर किया. मैं exact same चीज कर रहा हूँ, but I am converting the data type into float. So this is known as explicit conversion. So what this means is कि अगर आपको डेटा टाइप खुद से चेंज करना है, यू कैन डू दैट इन पाइथन लैंग्वेज. अगर आपको int को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, अगर आपको फ्लोट को int में कन्वर्ट करना है, यू कैन डू ऑल दैट. सो द प्रिंट, व्हेन वी प्रिंट num4, द वैल्यू वुड बी 30.0 because we have converted this entire value into float type. And when we try to find out, this answer would be float. Next example would be on the similar lines. जब हम लोग देख रहे हैं num1 is 10.2, num2 is 20.6, so num3 would be 30.8, right? So this will be printed. If I try to find out the type of num3, it will give you float क्योंकि वहां पर decimal numbers use हो रहे हैं, correct? But what if I want to convert this into integer data type? So I simply put this expression inside the brackets and बाहर मैंने लिख दिया int. So this will become 30 because आपका जो decimal part है, it will not be displayed. Integers cannot display decimals, so that is the reason आपका सिर्फ 30 print होगा. And finally, if you try to find out the type of num4, it will give you int. Again, this is called explicit conversion, जहां पर user tells Python language to convert from one data type to another. But there can be some other cases as we discussed before. So let's take this example, जहां पर num का जो data type है, that is int, num2 is float. When we add these two together, the answer would be 30.0, which is automatically a float value. So this is known as implicit type of conversion, जहां पर हम लोग input नहीं दे रहे हैं कि you want to convert from one data type to another. Python is itself converting from int and float into the float data type. So I hope you understood all the things which were covered in this video. If not, you can let me know in the comment section by asking me doubts. Hi, I am Aakash Singh. I graduated from IIT Bombay last year. I'm currently working as a software engineer. So any type of doubts regarding Python coding or any other logical doubt which you might have, please let me know in the comments. I'll be happy to help you. So you can just like the video if you found it useful. If you want me to create more content like this, you can comment it out. You can also share it among your friends. So I'll be seeing you in the next video. Till then, stay awesome. Bye-bye.